World of Plants, Chapter 8, World of Plants. Living beings are dependent on plants directly in or indirectly. आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज पिक्चर्स. Directly and indirectly plants. Thus plants are essential for survival of all living beings. Green plants make their own food. The process of photosynthesis, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन. इस प्रक्रिया में प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन को आउट करते हैं. इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया. Reproduction in plants. Reproduction refers to process of giving birth to young ones of one on kind. Plants reproduce through their seeds, roots, leaves and stems. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे बेबी प्लांट्स है वो किस तरीके से ग्रो करता है, उसकी पूरी प्रक्रिया, मतलब एक जो सीड्स है हमारे पास उसमें से प्लांट्स को ग्रो करना. जैसे एग्जांपल है मैंगो का अगर होता है तो मैंगो सीड्स होती है तो उसमें से हम प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं इस तरीके से. रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स. यू मस्ट हैव बीन हनी बीज एंड बटरफ्लाइज having our Stephens on flowers. The bright colors and sweet scents of flowers attract become and butterflies. These insects collect the sugary nectar present inside flowers. They also play a very important role in the life cycle of plants. They transfer pollen from one flower to another. Pollen is a powdery substance produced by the male part of flowers. This is carried by insect to the female parts of the same type of flowers. This process of transfer of pollen is called pollination. When a flower is pollinated, it produces seeds. A seed is a small, round or oval object. New plants grow from seed. A seed contains a food storage that can provide nutrition to the baby plant. Look at here, honey bee covered with the provided pollen. यहाँ से वो लोग जो रस होता है वो लेती हैं. एंड द सीड्स. स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स का मतलब क्या होता है कि किस तरीके का बीज का प्रकार होता है, किस तरीके के दिखते हैं. शोक अ फ्यू बीन्स इन वाटर अबाउट 24 hours. Then remove the top skin covering the beans with your fingernails. You will find two holes. They two holes or seed leaves are called cotyledons. कोटोडन्स यहाँ पे दिया गया है, इस तरीके से होता है. सीड कोट, सीड लीव्स एंड इम्ब्रोय सीड. ये बीज है, इसके ऊपर से ये कोट मतलब कि उसकी एक लेयर होती है उस तरीके से, जिसे कोट्यॉन्स कहते हैं, कोटोडन्स कहते हैं. अ सीड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स में होती है. द सीड्स कोट, ऊपर का कोट, विच प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट फ्रॉम एनी इंजरिंग और ड्राइंग आउट. अंदर से और बाहर से उसे कवर करके रखते हैं. कोटियाट विच स्टोर न्यूट्रिएंट्स फॉर द सीडिंग एंड द एम्ब्रोयज ऑफ बेबी प्लांट. जर्मिनेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था. जर्मिनेशन, द प्रोसेस ऑफ सीड चेंजिंग इनटू अ सीडिंग शेल्डिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन. इन द बिगिनिंग ऑफ द जर्मिनेशन प्रोसेस द सीड absorb वाटर एंड swells. This makes the seed coat split open. The root is the first to appear, followed by the shoot. Look at here, ये है germination of seed. 1 2 3 4 इस तरीके से 5 तरीके से इसकी प्रोसेस दी गई है, किस तरीके से ये बीज है यहाँ पे, एंड ये कहाँ से किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है ये आप देख सकते हो. फिर इस तरीके से वो एक ट्री बन के बैठ होता है. जैसे एग्जाम्पल ये मैंगो सीड्स है एंड ग्रो करके यहाँ तक ये 5 स्टेप है उसके, इस तरीके से ग्रो होती है.
Ideal condition for germination. For germination, seeds need that things. जर्मिनेशन में किस 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, मतलब क्या कंडीशन होनी चाहिए जिससे हमारा सीड्स जो है वो ग्रो कर सके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा वाटर. वाटर इज सीड्स ऑब्जॉर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल. वाटर सफिशिएंस द सीड कोट दैट द बेबी प्लांट्स कैन कम आउट. ऑक्सीजन, पहला तो आएगा वाटर. पानी के बिना तो सीड्स ग्रो कर ही नहीं सकता. सीड्स को पानी ऑब्जर्व करता है और सॉइल ऑब्जर्व करता है, उसके बाद वो ग्रो करता है. ऑक्सीजन जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है ऑक्सीजन. जर्मिनेटिंग सीड्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. सांस लेने के लिए उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है. वार्मथ, द गर्मी जैसे सन की है उस तरीके से. दिस हेल्प्स टू सीड टू germinate faster. A baby plants gets food from its seeds leaves. Okay. Seeds dispersal. Plants cannot move from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह प्लांट्स चल नहीं सकते, जा नहीं सकते, वो वहीं पे ही स्टे होती हैं. दे स्पेड सीड्स in order to germinate. वहाँ पे ही ग्रो करते हैं. It all the seeds fall on the ground near the patent plant and germinate. There will be an overcrowding and struggle for food, water and sunlight. These seeds must spread out in a large area so that they get a suitable condition and grow up into adult healthy plants. The crying away of fruits and seeds to distant places away from their parent plant is known as a seed dispersal. Seed and fruits of many plants have special features in order to get a dispersed focus of nature, like wind, water and animals also help in dispersal of seed. They are called agents of dispersal. Dispersal by wind. Dispersal wind. Seeds of many plants are so tiny and light that they can be easily carried to be wind. These seeds develop then flat wings or tufts or hair or to float in air. Seeds of drumstick, maple and cell trees have wings. Seeds or orchid are extremely light and small. Dandelion seeds are light and feathery. Maple seeds, orchid seed and dandelion seeds. Dispersal of waters. Aquatic plants and plants that grow near water have a spongy light covering on their seeds. This helps them stay afloat in water and travel to distant places to germinate. Coconut has a fibrous outer covering. It has air trapped between its fibers. The lotus has a spongy fruits. Look at here, a coconut floating in water. आप देख सकते हो यहाँ पे कोकोनट है जो पानी में तैर रहा है. वो ट्री ग्रो करता है पानी में. द स्पॉन्जी फ्रूट्स ऑफ लोटस, ये रहा लोटस मतलब कि कमल का, इस तरीके से वो भी पानी में फ्लोटिंग प्लांट्स है ये, पानी के अंदर होते हैं इस तरीके से. डिस्पर्सल बाय एनिमल्स. सम प्लांट्स प्रोड्यूस एडिबल फ्रूट्स दैट आर ईटन बाय एनिमल्स लाइक बर्ड्स, स्क्वायरल्स, monkeys, cattle and bats. The seeds eaten along with the fruits are not digested. These animals excrete the seeds in different places and the seeds emerge into new plants. For example, seeds of tomato, guava and chili plants are dispersed by this method. Human beings eat fleshy fruit and throw away their seeds in different places. The seeds of mango and jackfruit plants are dispersed by this method. Sometimes we bring the seeds of plants from distant places and grow them in our garden. Later, the seeds of these plants
plants may spread to other plants. Some plants have a different structure like hooks, barbs, spinners, bristles, and stiff hair on their fruits and seeds. These get stuck to the food animals and get dispersed to other places. For example, fruit extremely have a curved hooks. Look at here. पैराकिट ईटिंग गावा, ये रहा पैराकिट जो है वो गावा खाता है, मतलब अमरूद जो होते हैं वो. लुक एट हियर, ये रहा पिक्चर्स यहाँ पे गावा का दिया गया है. एंड सेकंड है अ शिप कवरेड विथ एक्सट्रीम सीड्स, ये रहा. ओके. Dispersal by explosions. Some plants have a fruits the burst suddenly and eject out their seeds with force. This is a mechanical form of dispersal, also known as the explosive mechanism. For example, dry pods of peas, poppy, and beans suddenly spilled into two holes and disperse their seeds. Look at here, explosion of poppy fruits. Reproduction without seeds. Reproduction without seed. Not all plants reproduce through seeds. There are some plants like the bananas that do not produce seeds. They reproduce from their bloody patterns like that root, stem, or leaf. This type of reproduction is called vegetative propagations. Through vegetative propagations, and any part of plant can grow into a new plants. The following are the three types of vegetative propagations. By roots, dahlia, carrot, and guava develop buds in their roots. These buds give rise to new plants under favorable conditions. By stems, if you cut any branch of rose plant and plant it in wet soil, the new branch will from a new rose tree. Money plant can also be grow is this method. Potatoes, zinger, and onion plants reproduced by their underground stem. Okay, look at here. Reproductions of stream किस तरीके से मतलब ग्रो हो रहा है यहाँ पे दिया गया है. एंड by leaves of sport leaf plants like Boreohyalum contain buds. These buds give rise to new plants under favorable conditions. By spores, some plants do not bear seeds and flowers. They reproduce through special structure called spores. Ferns, mushroom, and some fungi have spores on the underside of their leaves. These spores fall on the ground and grow into new plants. Plants from afar. Potatoes are not native to India, even though they from an important part of the cuisines of many regions. Potatoes, tomatoes, and papayas were introduced to India by the Portuguese. Reproduction is Boreohyalum